Good morning to all present. So it's my pleasure to share that we are having with us Dr. Surinder Bir Singh, who is active member of Punjab Chamber of Commerce. He is also serving as Joint Secretary at CACU, Chamber of Industrial and Commercial Undertakings, Ludhiana. Along with the same, we are having Mr. Jatinder Pal Singh, a very expertise, and he is delivering a number of lectures in several institutes to aware the youth about the different opportunities in the region of Punjab. Because being seeking we all are working in some of the sectors. So you are from field of XYZ. So you all will be seeking the jobs in the upcoming future with some good benchmarks. So they will be letting us know regarding the different opportunities in different segments. I would also like to share that both of them are having a huge experience of more than 25 to 30 years. So this is the biggest opportunity for us to grab the same and the maximum benefit. You can also share your views or any questions at the end if you want to discuss the things. Now I would like to welcome sir to please give us enlighten the everybody. First of all, I would like to thank the faculty and the management of City University that they have given us a chance to have an interaction with the students of the university. Today's topic is basically opportunities for youth in Punjab. So, first of all, I would like to brief you about ourselves also. My name is Dr. S.B. Singh and I am basically an engineering and management consultant. I have roughly around 32 years total experience, and out of that I have worked for industries for around 15 and a half years, and for the last around 16 and a half years I am working as a consultant with industries. As far as my qualifications are concerned, I have done BTech in mechanical engineering, then MBA in operation management, MSc in information technology and PhD in management, and it is a pleasure for me to share with you that I have been a scholar of City University. I have done PhD from City University itself. So basically me and Mr. Jatinder Pal Singh, we both have come here to represent a association called Punjabi Chamber of Commerce. It is a worldwide association of Punjabis with having headquarters in New Jersey, and there are different chapters in different countries, and in India also there are different chapters, like there is a Ludhiana chapter. Mr. Jatinder Pal Singh, he is the chair of Ludhiana chapter of PCC. At the same time, there are different chapters: Delhi chapter, Chandigarh, Jalandhar, Amritsar, many chapters, Bangalore, Mumbai, etc. And as far as PCC mandate is concerned, it is only the sole motto of PCC to help Punjabis worldwide. That is the sole motto of Punjabi Chamber of Commerce. So the reason behind planning today's event was that there is a need to make students aware about what are the different opportunities available for youth in Punjab. So when we say there are different opportunities available, but before I proceed, I would like to have a basic interaction with students. Is it audible right now also? Audible है ये पीछे? First of all, I would like to ask you, how many of you have an aim in your life? हमारा लाइफ में कोई एम कि हमने ये करना है, ये चीज करना है, we want to do this thing or we want to reach up to that level. Kindly raise your hand और थोड़ा दिख जाए आसानी से. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Say around 14, 15 students out of sitting over here have conveyed that they have an aim in their life. And per chance, if I am not wrong, probably it is around 100 sitting over here. So the basic percentage comes out to be around 15% of the people who have decided that they have set an aim for their life
And perchance, although ladies being sitting over here, it would be very awkward for me to ask directly for a question, but still I will not ask ladies only. We can ask about the average life, say what is the average age of the group sitting over here. It can be assumed to be around 20 years. Okay. And by chance, what do you feel that what is the average say lifespan of a person these years? 65 to 70 years. If you feel, अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ जहाँ आपको लगे कि I am saying something which is not acceptable to you, you can raise your hand also. Average lifespan of a person can be assumed it to be around 65 to 70 years. हाँ या ना नहीं आई है, ना ज़्यादा लोगों ने हाँ किया ना किया. Yes or no, I have not received from many people. It has to be an interactive session. Average lifespan of a person can be assumed to be 65 to 70 years. Yes, okay. In that case, if we calculate the percentage of lifespan which you have already spent, it comes out to be roughly around 30%. And out of our total lifespan, if we have already spent 30% of our lifespan, and still 85% of the people sitting over here are not yet able to say that they have set an aim in their life. It is very important. Everybody should have an aim in his or her life. It is foremost important thing. By chance you have not raised hand today because अब कभी सोचा नहीं इसके बारे में कि लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ जाना है, क्या आगे बढ़ना है. Today you have not raised hand, but आज के बाद मैं what I advise you to do is set an aim of your life. क्या करना है? Discuss with the faculty. If you are not able to decide, discuss with your parents, discuss with your elders, but set an aim in your life. मैं यहाँ personal, I would like to share one example with you. It is very relevant. Since as I told you that I have worked for around 15.5 years in a company, and last working where I was working was I was vice president in a group, Nix group of industries. And there was around 1,300 staff workers. There were 3 plants. I was managing all the 3 plants. And वो जो कंपनी मैंने जब ज्वाइन की थी, आई हैड ज्वाइंड एट ए लेवल ऑफ इंजीनियर इन दैट कंपनी, एंड आई वर्क फॉर 11 years ओवर देयर. बट जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, द डे आई ज्वाइन दैट कंपनी, आई वॉज आस्क्ड बाय ए मटेरियल्स सीनियर पर्सन ओवर देयर. ही वॉज वेरी एल्डर एंड ही आस्क्ड मी in the local language. They address it like this to a very younger person in Punjabi. They address like kaka. So he asked me, kaka zindagi ch ki karna hai? And I said, I was just in the beginning of my career, and I said कि जी आ जी अपनी कंपनी है, जी ग्रुप कंपनी का CEO बनना है. At that place where I am just joining as an engineer, there were 7 channels to reach that place. But still, I conveyed him कि सर अपनी कंपनी के CEO बनना है. And after working for around 11.5 years in that company, I reached from engineer to assistant manager, deputy manager, manager, senior manager, AGM, DGM, GM, and then vice president of that company in the span of total 11 years. But only because I had from the first day itself सोचा किथे होया सी कि उत्थे जाना है. So it is very important to have an aim in your life, and then once you set an aim in your life, then all your efforts start working towards achieving that aim. Then next part comes when we say opportunities for youth. There are 2 different opportunities for students who are studying over here. One could be working in a company, and second could be becoming an entrepreneur. I would be throwing light on both the aspects. There are lot of opportunities for entrepreneurship also. Many good opportunities. People are not aware, that's why they are not going in for that. I will throw light on that, and we will do hand holding also. If somebody is interested to become an entrepreneur, there are lot of schemes, subsidies available, and we are there to support
by doing hand holding part also. But I will go to the entrepreneurship part later on. But as far as the employment part is concerned, it is very important that we should prepare ourselves for getting, say, making ourselves employable. In industry, when we ask, we do lot of interaction with industry people. Since I am joint secretary with CICU, also Chamber of Industries and Commercial Undertakings, having around 30,000 members. So we do lot of interaction with industries. And the general notion what industrialists say, I am not saying whether it is right or wrong, but the general notion when industrialists convey is कि we need around 100 people for offering our employment opportunities. There are 1,500 candidates available, but we are not able to find the suitable candidates, not more than 10 to 20. So there is a big gap between what industry expects and what is, say, as far as our skill level is concerned. And I would like to throw light on what are the gaps and how we can cover those gaps. First of all, see, you get an, as far as professional courses are concerned, you get an opportunity to visit an industry either by, say, आपका कुछ training का session रहता है, कोई 1.5 months training in industries, or say in engineering, if there are some from engineering side, then there would be 6 months training. And what we have observed is that students prefer कि जाना नहीं पड़े, certificate ही दवा दो जी. The problem starts from here. The problem starts from here. That is an opportunity you get wherein you can visit a company and see the operations of that company, how does it work. And when we bypass that, in that case, that opportunity we are losing. So it is very important, if you ever get an opportunity to visit a company either for a one-day visit or a training part, you are given some project, work on that project in association with industries. Be involved in that. Then only you will be able to gain the real knowledge which is going to help you in working, in getting the opportunity for working and then further growing in whatever working company you are working. So it is very important, if you are able to get an opportunity for training, go in the real spirit of that training. Practical वहाँ जाओ, देखो उसको observe करो, how does they work. Make a formal training report, क्या observe किया. Share it with the company representatives over there also, whatever you have observed. Even if you have missed something, they will let you know that this was the important function of the company and you have missed that part. So then next part comes that as far as that, say, your basic impact, whatever you send your CV to a company, you are not practically present over there. Your CV is going to make an impact whether you are being shortlisted for calling for interview or not. At times what we have felt is good candidate having some good skills only left out during shortlisting because CV is not that much appealing. So designing of CV is also very important aspect. We come across many such CVs जहाँ वो 5 पेज का है, 6 pages CV. I don't think that nobody will be able to find time to go through all the details. It has to be crisp and not that much crisp कि वो आधा पेज ही है. Around 1.5-2 pages you cover all the aspects, all your qualifications and extracurricular activities also. Whatever extracurricular activities you are participating, we do mention in those extracurricular activities also in your CV. And then next part comes, at times what we have observed is we do write hobbies also in our CV. And what we have practically observed is that when we write our hobbies, the general way of writing hobbies is just a group of people sitting and one asks another, तूने क्या लिखी है hobby? Traveling and making friends? मैं भी यही लिख देती हूँ. Hobby is such thing which is very close to you throughout your life.
सो हॉबी वही लिखनी चाहिए जिसके बारे में अगर आपको बोला जाए कि यू शुड स्पीक फॉर 5-7 मिनट्स, यू शुड बी एबल टू स्पीक फॉर 5-7 मिनट्स. अगर हमने पूछ के लिखी है तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट से स्पीक ऑन दैट पार्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव सम हॉबी, राइट इट. It is not mandatory to write hobby. If you don't have any hobby which is specific on which you can give details, don't write it. So it is very important. One aspect is CV. How do you prepare your CV? Then next part is you are called for interview in a company. There are lot of opportunities available through different platforms wherein you can get detailed information about that company. What are the products being made by that company? What are the services being offered by that company? So, and where are their plants? How is their working? So, in the interview, these days people expect whether you have learned about our company, what do we do? So, there is an opportunity through different platforms available. Gather more information about that company for which you are going to appear for interview. And at times, a person is called for interview say at around 11 a.m. and then in that case he or she is reaching at say 11:10 or 11:15 a.m. What is the impact it is going to create over there? So it is again very important, time management. And sorry to say, I kindly excuse me, it may sound a bit bitter and harsh to you, but what we have observed these days is generally what I have observed is we don't follow time management effectively. We should be very particular of time. Very particular of time. Because reason being, it creates an image about yourself. I'll cite an interesting thing with you through which you can gauge what impact it makes. I am sitting in my office, got a call from a gentleman that he is going to come to my office say at 2 p.m. But I could be having two kinds of notion about that person. मेरे दिमाग में उस पर्सन की दो इमेज हो सकती हैं. एक इमेज ऐसी होगी कि इसने कह तो दिया 2 बजे आ रहा हूं, मे बी ही मे कम एट 2 p.m. or not even come at 2 p.m. and will not inform also. मे बी 3 बजे आए, 4 बजे आए और नहीं भी आए और बताए भी नहीं. दैट कुड बी वन नोशन अबाउट दैट पर्सन. एंड द सेकेंड नोशन कुड बी ABC पर्सन है, इसने 2 बजे कहा है तो ही विल बी डॉट देयर एट 2 p.m. I will make all preparations for that meeting if I have that notion. But if I am having that notion कि ये इसने 2 बजे कहा है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बताएगा भी नहीं, will I be preparing accordingly for that meeting? Yes or no? No. So what kind of image we want to create in front of people? A good time manager or not at all observing any time? It really helps in life. पर वो कैसे होगा? Not only in your professional life, it has to be in your personal life also. आदत बनती है, हैबिट्स बनती हैं, then you carry it in your life. आपने किसी अपने फ्रेंड को बोल दिया ना, गोलगप्पे खाने जाना है, शाम को 5 बजे मिलेंगे, reach at 5 p.m. make it a point. Then ये आपकी आदत बननी शुरू होगी and then you will become a good time manager. So it is very important. आप अपने डे को शेड्यूल कीजिए, कितने बजे क्या करना है. You should have a daily schedule also. Try to follow that schedule. And then next part comes attitude towards work. Again very important. It really helps. It is a part which helps you when you join a company. When you join a company, your attitude really matters over there in your progress over there. So first part is joining a company. Second part is attitude towards your work. So when you are going to join a company, then once you have joined that company, your attitude matters the most in your progress. And now I will cite you, there are 3 different types of attitude. बट ज़्यादातर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी किसी को
एटीट्यूड के बारे में किसी फैकल्टी को ब्रीफ करने के लिए बोलते हैं, व्हेन वी से एनी फैकल्टी टू ब्रीफ अबाउट एटीट्यूड, ही और शी डिफाइंस इट इन टू वेज ओनली. One way is good attitude, positive attitude. If I ask something to do, you to do something, and if you say immediately, okay sir, I will do it, that is a positive attitude reply. I hope all will agree. Do you agree with this? And the second attitude people explain is negative attitude. If I say something to you and you say, sir, I am not in a position to do so, that is a negative attitude, and people define attitude in two ways only. Most of the people define attitude in two ways, but I have a third definition of attitude also, and I call it, हिंदी में कहेंगे तो घोर negative attitude, very strong negative attitude. This is third dimension of attitude, and it is very much prevalent in people these days. 85 to 90% people have that strong negative attitude. What is it? I say something to you, do this. You neither say, okay, I'll do it, and nor you say, I will not be able to do so. You start working on it, but carrying a feeling, मन में ये भावना लेकर आपने काम करना शुरू कर दिया, लो जी मुसीबत पड़ गई, सर ने कह दिया अब ये करना पड़ेगा. With this attitude, 85 to 90% people work. And this is the main crux of the problem. When we are not having passion to do something, it will not give you effectiveness. It will give effectiveness only when you have a passion to do that thing. So be passionate about whatever you do. You should be passionate about that. So it is very important that we should be involved in whatever we do. So these few things are there which can help you in your, say, interviews and making yourself effective. This was a part which could help you as far as employment opportunities are concerned. And herein I would like to throw light on one aspect also. But I have observed, अभी मैं Chamber of Industries में बहुत सारे हम job fair भी करते हैं. We do lot of job fairs. Yesterday also we had a job fair at CISU Ludhiana where 4,000 students appeared for interviews and around 2,000 got selected out of them. And what we have observed there is, हम जब कोई भी कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, हमारी सोच पता क्या होती है कि मेहनत वाला काम ना करना पड़े, एंड आई शुड गेट ए पैकेज ऑफ से 15 lakhs 20 lakhs. बट ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है. इट इज़ ए बिट डिफरेंट फ्रॉम वट वी सी इन हम जो देखते हैं ना सोशल मीडिया पर, किसी को 50 लाख का पैकेज मिल गया, किसी को 48 लाख का पैकेज मिल गया. डू यू नो वट इज द परसेंटेज ऑफ दोज पीपल? नॉट मोर देन 1%. इट इज वेल बिलो 1%. बट initially when we go in for a job, there is a big gap between what industry expects from us and what we are being taught, and but that is not in our control. हमारा सिलेबस भी कई बार हमने देखा है कि इंडस्ट्री जो एक्सपेक्ट करती है उससे थोड़ा आउटडेटेड है. बट एज ए स्टूडेंट यू कांट हेल्प इन दैट. बट वंस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, इनिशियली डोंट थिंक अबाउट द सैलरी पार्ट. Treat it as an opportunity to know how to work. I will cite you my personal example. As I told you that I have worked for around 15 and a half years. Can you imagine when I joined in a company in 1990? I had done BTech at that time. I was a fresher and I was offered a salary of rupees 1,800 at that time. 1800 रुपये was the salary offered to me, but I had not kept that in mind कि मिल क्या रहा है. I had thought कि I am getting an opportunity to work and I will work on that. And within a span of, I have worked for around total 15 years. I left the job in 2006. So मैंने लगभग 15 साल वर्किंग की है. Although I joined at 1,800 salary, but when I left the job,
as vice president where I was working, I was getting a salary of rupees 1.5 lakhs at the time in the year 2006. You can very well imagine 2006 का 1.5 लाख आज की तारीख में कितना होगा. आई एम नॉट सेइंग दैट फिगर कहीं कोई इनकम टैक्स का बीच में नहीं बैठा हो. ओनली बिकॉज मैंने पहले दिन वो नहीं देखा कि 1800 सैलरी मिल रही है. I thought कि I am getting an opportunity to work somewhere. I am not saying getting good opportunities. If you get good opportunity, go in for it, no problem. But खाली बैठने से अच्छा है, whatever opportunity you are getting, start working on that part. Growth is bound to come. If you are passionate in working, अच्छा काम कर रहे हो, growth is bound to come to you. So it is dead sure. So as far as the employment part is concerned, these things I think would be helpful to you as far as employment part is concerned. Now I am coming to the entrepreneurship part. Generally, some percent of students are interested in entrepreneurship also. Let me check. आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं? A very good percentage, say around 8 to 10% people are interested in becoming entrepreneurs. So there are lot of good opportunities available. Sir, next slide कर दोगे please. So when you want to become an entrepreneur, it is very important to select a project कि हमने करना क्या है. There are two kinds of possibilities available. Manufacturing sector में जाया जा सकता है, कुछ बनाना is a manufacturing, and to provide services is service sector. There are both kinds of opportunities available. You can go in service sector also and you can go into manufacturing also. Then जब आप कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, there are different kinds of support available over here. यहाँ पर एक MSME डिपार्टमेंट है. There is a department called MSME, Micro Small and Medium Enterprises Department. It is a Government of India concern and they have an office just opposite to Sangeet Cinema near Pratap Chowk in Ludhiana. एंड दे आर देयर टू सपोर्ट यू. अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करनी है तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी? दे सपोर्ट अस ऑन हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. देन जस्ट नियर टू दैट MSME डिपार्टमेंट के बिल्कुल साथ में ही वहां पर एक और ऑफिस है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट, DBEE. दे आल्सो सपोर्ट यू. अगर आप कोई भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको चाहिए तो दे आर देयर टू सपोर्ट यू. डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एंड जब आपने प्रोजेक्ट आपका कोई आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आ गई डिफरेंट, यू स्टडी दैट प्रोजेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ फीजिबिलिटी पार्ट आल्सो. फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, इसमें खर्चा कितना इन्वॉल्व है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, सेल कितने की हो सकती है. दिस इज फाइनेंशियल फीजिबिलिटी. टेक्निकल फिजिबिलिटी, इसकी मशीनें कहाँ से लगेंगी, कौन कौन सी मशीन लगेंगी, अवेलेबल हैं या इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पर्सन स्किल्ड कौन कौन से चाहिए. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग अंडर टेक्निकल फिजिबिलिटी पार्ट. जब आप दोनों चीज़ों से इवेल्युएट करते हैं, इफ यू हैव इनिशियली शॉर्टलिस्टेड 5-7 प्रोजेक्ट्स, यू कैन बी एबल टू शॉर्टलिस्ट 1 or 2 प्रोजेक्ट्स की ये प्रोजेक्ट ज़्यादा वायबल है. वंस यू हैव सिलेक्टेड द प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट की फंडिंग. नाउ आई विल थ्रो लाइट ऑन प्रोजेक्ट फंडिंग पार्ट आल्सो. देन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करना. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट फंडिंग पार्ट, बट अगर हम स्टेप्स की बात करें, देन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, उसका एक रोड मैप बनाना, कहाँ मैंने जगह खरीदनी है, कहाँ से मशीनें खरीदनी है, कब रॉ मटेरियल खरीदना है, कब उसका कोई ट्रायल करना है, ऑल दैट इज कॉल्ड ए रोड मैप फॉर दैट एक्टिविटीज. Then necessary approvals for running industry, there are lot of approvals required, and let me share it with you. Punjab government has come with a very good initiative which is ease of doing business, and it is called Invest Punjab. And on that portal 23 टाइप के डिफरेंट क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं एक इंडस्ट्री चलाने के लिए. 23 टाइप ऑफ डिफरेंट क्लियरेंसेस आर रिक्वायर्ड. आगे बहुत दिक्कत रहती थी how to get clearances, and it used to take 1.5-2 years to get those clearances for running industry. And Punjab government has now made a portal on which you have to
make a single application and you will get all 23 clearances through that single application, and that all is arranged within a span of 1 to 1.5 month only. इसे 1.5 महीने में वो सारे के सारे क्लियरेंसेस उस एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाते हैं. So it has become a lot easier now. Then marketing and order processing, working capital management. This is very important in an entrepreneurship setup. I have worked on a project where PSIC had involved me to study some sick units, sick SICK, sick units. PSIC ने हमें एक स्टडी दी थी कि एक सिक यूनिट्स को स्टडी करके बताइए कि इनका रीजन क्या रहा, व्हाई दे हैव बिकम सिक यूनिट्स. एंड our study found that there were 85 to 87% units were having working capital mismanagement. Working capital means आपने you have purchased machines, you thought of cost of machines, you had put that in mind in your budget also, you had noted it down. You want to purchase land, you have already marked it. All such other expenses you have already considered. But once you start processing, आपने कोई मटेरियल खरीदना है तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप 2 किलो या 10 किलो खरीदोगे. You need to purchase say 1 ton 2 ton material, और वो आज ही तैयार नहीं हो जाएगा. It will not get ready today itself. It will take 10-15 days to get it completed. आप 10-15 दिन बाद उस मटेरियल को सेल करोगे, आपको उसी दिन पेमेंट नहीं मिलेगी. 15 days, 30 days, 45 days depending on the payment terms. So इतने दिन आप रोज मटेरियल बना रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, सप्लाई भी कर रहे हो, और आपको अभी पेमेंट नहीं मिलनी है. आपका पेमेंट वो 40 या 35 डेज वाला जो पार्ट है उसके सर्कल के अनुसार मिलना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू स्टार्ट ए बिजनेस, उसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन मार्केटिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट सिस्टम्स, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमें प्लांट के बारे में पता चलता रहे कैसा जा रहा है, आर वी रनिंग इट ओके और नॉट. देन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्या क्या ऑर्डर्स आए, कब बनना चाहिए, टाइम से जा रहा है नहीं जा रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. सो वंस वी हैव दिस, देन we can run our business very effectively. Now I will throw light on what are the different incentives and subsidies available. There is a basic scheme called Prime Minister Employment Generation Program, PMEGP, and there are two kinds of projects approved under it. For manufacturing sector, there is total the project cost is 50 lakhs. Up to 50 lakhs project can be set up for manufacturing, and for service industry it is 20 lakhs, and there is a good amount of subsidy also available on this part. Okay, and in urban areas the subsidy amount is up to 25%, whereas in rural areas the subsidy amount is up to 35%. I will request you to kindly maintain silence, please. If anybody wants to speak something, I would invite you to kindly come over here and speak, please. Kindly maintain silence. I am very particular about that. The university has created an opportunity to you to learn for something, and we have come all the way from Ludhiana to share it with you. Kindly maintain silence for that. So, अगर आप 50 लाख तक का प्रोजेक्ट कोई लगाते हैं, मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा what are the benefits, how do you avail the benefits. Up to 80% can be funding arranged from the any financial institution, say 40 lakhs. आप अगर 50 लाख का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, if you are putting up a 50 lakhs project, the funding could be around 80% up to 40 lakhs. And that is without collateral also. Without collateral means बिना रजिस्ट्री या सिक्योरिटी दिए हुए. You can get a loan up to rupees 40 lakhs. Then the second part comes.
अब आपने लोन लिया 40 लाख, 10 लाख रुपए आपने खुद इन्वेस्ट किया, इफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 50 lakhs, इन दैट केस द सब्सिडी पार्ट इफ इट इज रूरल एरिया, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख का है और अगर आपकी 35% सब्सिडी है 35%, इट कम्स आउट टू बी रफली अराउंड 19 lakhs। यानी आपने 40 लाख का जो लोन लिया उसमें से आपने वापस सिर्फ 21 लाख करना है। 19 lakhs इज सब्सिडी टू यू। तो दिस इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सब्सिडी अवेलेबल अंडर दिस स्कीम एंड इट इज वेरी इजी टू डू, ऑल डिजिटल मोड, किधरे जाने की लोड़ नहीं, इट इज ऑल डिजिटल मोड। There is a website called mymsme.gov.in. mymsme.gov.in. There is a website on which all schemes are available. Then, once you have set up a unit by getting subsidy under this Prime Minister Employment Generation Program, then the second part comes. If you want to expand your business and you want to purchase some new machinery, if you want to purchase a machinery up to rupees 1 crores, there is another 15% subsidy, rupees 15 lakhs. There is another subsidy 15%, 15 lakhs also available for expansion of your business. So that is again available to you. Now comes a startup part. There are for a startup, when we say startup, it has to be got registered under the startup policy, and there are lot of incentives available for startup, those who have got registered their company as a startup company. Income tax 3 years is available. You will don't have to pay 3 years income tax out of the total 7 years of the running of that plant. Then at the same time there is a fund available without collateral. You can get funding of up to rupees 5 crores. 5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग आपको विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी मिल सकती है अंडर स्टार्टअप। देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स, अगर आप अपने स्टार्टअप को रन कर रहे हैं तो आपको जितने भी क्लियरेंसेस चाहिए वो सारे क्लियरेंसेस आपको विद सिंगल एप्लीकेशन मिल जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम जब आप अपने उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो अनदर वो जो 1 करोड़ की सब्सिडी है आपको वो भी अवेलेबल है 15%, 15 lakhs। सो फॉर एक्सपेंशन ऑफ योर जो पार्ट है उसमें भी आपको वो सब्सिडी अवेलेबल है 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15%, 15 लाख रुपए। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल टू स्टार्टअप्स। IPR बेनिफिट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपने नाम सुना है, ट्रेडमार्क सुना हुआ है। सो दिस इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा बोलते हैं इसको हिंदी में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आई हैव थॉट समथिंग, मेड सम डिजाइन एंड इट इज यूनिक डिजाइन, इट इज माय IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है तो आपको यू गेट ए सब्सिडी ऑफ रुपीज 10,000 ऑन IPR ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अगर आप कोई पेटेंट रजिस्टर करते हैं, you get a subsidy of rupees 1 lakh on a domestic patent registration. You get subsidy of rupees 5 lakhs on international patent registration. उसके बाद ओके, अंडर इन्वेस्ट पंजाब पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, PMEGP में आप 50 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट पास करवा के शुरू कर सकते हैं। उसके बाद गेटिंग सब्सिडी ऑफ 15% फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस अप टू रुपीज 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरी। उसके बाद उसी प्रोजेक्ट में आपको साथ में ये वाले बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। आपको सब जो आपका SGST पार्ट रहता है उसकी 7 साल तक रीइंबर्समेंट होती है। स्टेट GST पार्ट जितना रहता है GST में, दैट इज रीइंबर्स्ड फॉर 7 years। देन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, आपके बिजली बिल में 13% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, 13%, वो 7 साल तक वेव्ड ऑफ है। आपके बिजली बिल में
13% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेगी इफ यू पुट योर एप्लीकेशन अंडर इन्वेस्ट पंजाब। देन अगर आपने कोई जमीन खरीदी, उसमें जो आपके स्टाम्प ड्यूटी लगी रजिस्ट्री करवाने के लिए, दैट इज रीइंबर्स्ड। आपको कोई चेंज ऑफ लैंड यूज करना पड़ा तो उसमें चेंज ऑफ लैंड यूज जो है उसके एक्सपेंसेस आपको रीइंबर्स हो जाएंगे। सो ये सारे जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, these are all benefits available under the Invest Punjab scheme. So there are lot of incentives available to MSME units under Invest Punjab, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट की इन्वेस्ट पंजाब पॉलिसी है। एंड एट द सेम टाइम बेसिक अगर आपने बिजनेस शुरू करना है फ्रॉम PMEGP यू कैन स्टार्ट। फर्दर एक्सपेंशन आप क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के थ्रू ले सकते हैं, और एक ही प्रोजेक्ट में आप दोनों तरीके के बेनिफिट्स ले सकते हैं। इवन दी फूड इंडस्ट्री आल्सो, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, दे आल्सो हैव वेरी गुड सब्सिडीज अवेलेबल अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 35% तो हर एक इंडस्ट्री में है ऑफ फूड प्रोसेसिंग साइड, 35% सब्सिडी। एंड इन सर्टन एरियाज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देयर इज ए सब्सिडी ऑफ 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सो these are some very good incentives and subsidies available from the government side. Only part is since we are not aware of that, so we don't avail for that. और कई बार ऐसा भी लगता है कि कैसे करेंगे, how to go for it. We are there to support. अगर किसी का इंटरेस्ट हो कि हम इन स्कीम्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, you can get your interest noted with Dr. Sachit. We can even create a nodal office over here कि अगर आपका कोई इंटरेस्ट होगा तो we can do hand holding part also. गाइडेंस के लिए अगर आप कंपनीज में कुछ इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, रियल हैंड होल्डिंग वाला जो पार्ट है उसमें अगर आप यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, बट इंटरेस्ट शुड कम फ्रॉम योर साइड। दैट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पार्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू, अगर आप ये दोनों चीज़ों का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद डॉक्टर सचित। आप उनको नोट करा सकते हैं। Once we get that information कि some students are interested, we will arrange all kinds of hand holding for you. So this was a brief about what are the total incentives available and how say it can help you in getting the employment opportunities also. Now we are open for interaction also. If you have any queries, I will be more than happy to answer your queries. Yes, Hanji, please. Sir, is it only for like the residents of Punjab, or is it like from anyone from There is no such restriction. Anybody can go in for all these schemes. There is no such restriction. Yes, Hanji. Such as PM scheme, I want to ask for that. In case you have said that there will be a loan of about 50 lakhs. Total project cost is 50 lakhs maximum. उसमें से 80% जो भी आप प्रोजेक्ट कॉस्ट बताएंगे उसका 80% तक लोन सैंक्शन हो सकता है बैंक से। जरूरी नहीं 50 लाख का ही प्रोजेक्ट लगाना है, आप 10 लाख का प्रोजेक्ट लगाते हो 8 लाख लोन ले सकते हो, 2 लाख खुद का लगा सकते हो। दैट इज द मैक्सिमम कैप कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट उसमें 50 लाख का पास हो सकता है। See, as far as the project part is concerned, this subsidy is available only say one time subsidy available to you. जो प्रोजेक्ट है इन केस अगर वो किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम में आता है, इन दैट केस अगर तो आपने अपने आप को स्टार्टअप में रजिस्टर करवाया हुआ है तो इन दैट केस देयर इज ए फेज आउट पॉलिसी फॉर दैट अंडर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। बट अगर आपने स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो देन टोटल रिस्क इज योर्स। Under startup, if you have got registered, there is a phase out policy for say going out of that also. Any more queries, please? If there are no queries or say lesser queries, generally there are two kinds of situation. Either सारा कुछ समझ आ गया है तो या फिर सारा कुछ बाउंसर उत्तो ही लंघ गया है। I don't know what impact it has created, but there are lesser queries, so I am not able to gauge whether you have been able to understand this or not. Still, we are open. अगर आपको में से किसी भी टाइप की कोई queries हो या कुछ पूछना चाहें, you can ask after the session also. And if you are interested to get the benefits कि हम hand holding हमें support चाहिए,
you can get yourself noted with Dr. Sachin. So if there are no more queries, I would like to invite my friend Jatinder Pal Singh ji to share. Let me brief about him. He is running an industry called Weltec Group of Companies, which has many manufacturing plants, welding machines making, welding accessories making, sheet metal component manufacturing 1 unit. Then they make industrial gases also under the name Harpreet Gases. And apart from being a very good say industrialist of the region, he is very much involved in the social service part also. I don't know how many of you belong to Ludhiana. In Ludhiana there was in 2014 there was a very good initiative taken by an NGO called Sambhav Foundation. 2014 में इन्होंने, he is the founder chairman of Sambhav Foundation. इन्होंने 2014 में they had taken an initiative to plant 1 lakh plants in 1 hour. 1 घंटे में 1 लाख प्लांट्स लगाने का इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, and they were able to successfully plant 1,85,000 plants in 1 hour in 2014. 2015 में इन्होंने उस इनिशिएटिव को थोड़ा और आगे बढ़ाया था. They had taken an initiative to plant 1 crore plants in a single day throughout Punjab. पूरे पंजाब में 1 करोड़ प्लांटेशन का इन्होंने टारगेट रखा था. Although टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, बट जो अचीव हुआ था, it is also really worthwhile. They were able to plant 85 lakh plants in a single day in Punjab. So this is the kind of personality we are having. He is the chairperson of Punjabi Chamber of Commerce also. I would like Jatinder Pal ji to share his view for 5-7 minutes. So good morning. Good morning, sir. गूंगे बोलते नहीं भाई, जोर दी बोलना थोड़ा जिहा. गुड मॉर्निंग. ओके भाई, हाउ मैनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड पंजाबी? हाउ मैनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश? ओके, आई विल से फ्यू थिंग्स इन पंजाबी. जिन्होंने आंदी है इंग्लिश उन्होंने करके दस दियो भाई, थोड़ी जी मेरी हेल्प हो जाऊगी. ठीक है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? बाकी सक्सेसफुल नहीं होना चाहते. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू फील्स बीइंग सक्सेसफुल इज डैम इजी? आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस. बीइंग सक्सेसफुल इज डैम इजी. मैं अपने बारे थानू दस देना. आई एम 57. माई नेम इज़ जतिंदर पाल सिंह. ज़्यादा लोग मैंने छोटे मोटे अंकल के नाम नाल जानते हैं. जेडे बाकी ने कुछ चार्जर, कुछ पावर हाउस, कुछ ट्रांसफार्मर के नाम नाल जानते हैं. सो आई लिव लाइफ 100%. आई इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ. जो लोग सुपने च भी सोच के कहते ना मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जूगी, वो मैनू मिल गया. वो 2 चीज़ा करके मैनू मिल गया. मैं जो लाइफ नू स्टडी किया, आई एम इनटू ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द लास्ट 24 ईयर्स. हाँ जी, ओके. So I am into transformation for the last 24 years and I got an opportunity to train around 80,000 people in the last 24 years into creating dreams and fulfilling them. So what I observed is like most of people, they don't have dreams. Can I see like how many of you have dreams like I want to be this, whatever. We आ करना 2 साल 3 साल 5 साल. So most of the people, if you don't have dreams, how will God or anyone help you to achieve them? So first thing I train people into is having dreams and then to accomplish dreams. How to reach your goals. वो ऐदा हो जाता है. ऐदा मतलब लोग कहते हैं जॉब्स है नहीं, बिल्कुल है नहीं. जॉब सीकर वास्ते कोई जगह नहीं है, पर सोल्यूशन प्रोवाइडर वास्ते जगह ही जगह है. थोड़े कॉलेज दे विच ही थोड़े कोल इन्नियां अपॉर्चुनिटीज मिल जाणगियां इफ यू आर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर. बट
It all depends where SB Singh ji ne kaha, attitude is what matters. If you have an attitude of being a solution provider, you get whatever package you want. But the thing is, do you have a mindset of being a solution provider? Number one. And it starts with when you express yourself. And for your knowledge, 80% of the people in the world, they don't know how to express themselves. Even if they want to say I love you to their wife, they are unable to say that. कोई हो रही है अंदर. Do you want this to happen in your life? Do you want someone to say I love you to your spouse? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ I love you ਕਹੇ ਆ? तो ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, the kind of commitment they have. But if you don't express what you want, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਛੁੰਛੁਣਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ. ਮੇਰਾ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਅਜਮਾ ਲਿਆ. जो देखता है उसनू दिसदा है. की बोलिया मैं? जो सुनता है उसे नू सुनता है. बोलो जरा. जो सुनता है उसे नू सुनता है. जो दस्तक देंदा है उस लिए दरवाजा खुल जाता है. हजारां वारी अजमा लिया. डॉक्टर SB सिंह बहुत पढ़े लिखे ने. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. But just with one conviction, I am a solution provider. 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਤਾ. ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਾ ਜਾ ਸਰਦਾਰ, ਆਪਾਂ ਵੇ ਚੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋ 2014 2015 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ. ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ. ਸੋ ਡੈਮ ਈਜ਼ੀ. ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮੁਝੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸੂਗੇ. ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੋ. ਐਂਡ ਦ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ. ਜਿੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ. ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਇਨ ਲਾਈਫ. I never knew anything about plants when I took on the plants projects. But the best of best people were available when I had declared ਆ ਕਰਨਾ. ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਲਾਂਟ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 2014-15, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਕਰੋੜ ਬੂਟਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ. ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਬੈਸਟ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆ ਗਈ. Where there is a will, there is a way. SB ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਗਏ. When you have a target, when you have a target, everything happens automatically. सिर्फ गल ते करो, बात करने से बात बनती है. I promise you ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕਰਨੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ. ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, बट उस तो सब तो पहला अपने आप की इज्जत करनी सीखो. ऐदा सारे जने प्लीज़ हाथ उत्ते करियो. सारे जने आ वाला राइट हैंड उपर करियो. अज ना राइट हैंड उपर करके शीशे के अगे जाके ते उन्होंने स्माइल जिहा दे के ना शीशे नूं सारिਆਂ ने अपने आप नूं थापी देनी है. दियो जरा थापी ऐदा थापी दे के कहना मम्मी पापा आइटम बड़ी शानदार बनाई है. If you give a damn to yourself, the world gives a damn to you. But if you respect yourself, the world respects you. ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ. I love myself, the world loves me. ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ 500-400 I love you ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ. ਬਾਏ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅੱਜ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਜਿਕ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕੋ ਦੇਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। So like all of you are amazing. Just you need to respect yourself and the magic happens. Thank you ji. Thank you. We are privileged to have personalities like Mr. Jitendra Singh with us. Actually, he is a true motivational speaker. Having a hidden talent inside the same. ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਦਿਓ ਜੀ, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, वो मेरे हस्ते ही बढ़िया। दिल दर्द जिगर दर्द सहेली भज गई, सहेला भज गया, घर वाली गुस्सा कर गई, मंदी नहीं पई मनानी पैंदी है, आजो साडे कोल सब ठीक कर देंगे। So I would like to add, the moment I was going through his profile, he has shared, we are sitting in the boardroom and he has shared his card with me. And I am surprised to see he is running four units in Ludhiana only. He is having a vast experience and in vertical number of domains. He is into manufacturing sector. He is dealing with the gas pipelines works and other things also in parallel. And the moment Dr. S.B. Singh is sharing the views that at the time of pandemic, when no corporate is providing any oxygen to the hospital, he is having his gas agency. He cancelled all the appointments just to serve the society. He delivered the entire gas manufactured in his units to the hospitals only. He cancelled all his assignments related to this. These are few of the things that should be added into one's life. The things, the moment I will be sharing the things in the classroom here, there is lot of opportunity. Just you have to have a look over the same. So again, I would like to thank Dr. S.B. Singh ji and Mr. Jitendra Singh for throwing a huge light on us and being aware about the different program of MSMEs. Punjab Chamber of Commerce is there to help us. And even the moment I was sitting, ma'am came to me, sir, I have to interact with him. So by what time should I interact? Right now it is not a big thing to you. यार अभी क्या करना है करके इसको? You are having mindset. What is startup? This is a big question mark. What are the benefits we can get from the same? Truly speaking, if you are doing entrepreneurship, that is a lot of earning is there instead of going for any job. Job is something that is you are getting a I'm sorry, taking like 1 or 2 minutes. ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ। There is another opportunity very much available with PCC. ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ called PCC Angels. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ there is a new very good opportunity called Angel Investment. We have a big Angel Investment. ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, we can arrange for it. ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। They will definitely take ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 5% 10% ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ, 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਏਗਾ। It is called angel investment and we have a special wing called PCC Angels. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ as far as angel investment is concerned. Thank you. Thank you so much, sir. So we are seeking that we should have 1 or 2 sessions in the upcoming semester of the sir. So where you can, sir, practically share the different kinds of projects which a fresher is making and will be getting a grant, so that they can have an insight in how to make projects and what are the different thinking levels or what are the different steps they have to follow for getting a particular project. So you can just share the few case studies for the future. But first of all, they have to show their interest to you in return. And anybody, those who are interested, they can contact their class in charge or myself. I will be available in the office of Dean Sir. You can contact me any other time if you are interested. So we have been there to help you out in number of ways. Even City University is having MOU with Punjab Chamber of Commerce and CSU. So university is too helping you out in earn while you learn the program. You can say you can having a lot of opportunities inside the particular segment. So again, I would like to thank sir for joining us at City University, and thank you everyone for your patience. First of all, I would like to say
and to my team, School of Medicine, School of Engineering, for leading such a thing. Thank you everyone. ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੱਬ ਹੈ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹੈ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ